Hello, guys, and welcome to Football Arena. Again, I want to say thanks to Nitika for again coming in my channel. And I know थोड़े दिन पहले it was a very hard luck कि वापस आप एक ही पॉइंट से हार गए second time. So how much you were disappointed about that, and also how much you are proud of the team because since January they are playing very good, very good. Every match is like a final for Liverpool. So how much you are proud as well as disappointed? I think disappointment comes in the play when your team performs so well and you know that they had it in them to just make maybe do something that would be written in history because everybody was talking about quadruple and हम बस एक पॉइंट से हार गए to make it happen. So that shows that it's really not easy to win a Premier League. That's why I think still considering the performances that Liverpool has had, I am proud of them. I think I've had a wonderful season because as fans हम हर गेम देखते हैं, हम हर चीज़ फ़ॉलो करते हैं, हम उनके हर अकाउंट को फ़ॉलो करते हैं, इवन ऑफ द पिच, ऑन द पिच, वी आर एडिक्टेड टू एवरीथिंग दैट दे डू. सो आई थिंक दैट देयर आर टाइम्स व्हेन हमारा बीपी बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट दे गिव. एंड ऑल्सो देयर वाज अ टाइम कि शायद लिवरपूल जीत जाती क्योंकि सिटी वाज डाउन. दूसरा गोल या कुटिन्हो ने मारा था. इट वाज फुल रोमांटिक, अरे फुल स्टोरी लाइन होने वाला था. एग्जैक्टली दैट इज द वर्स्ट थिंग द वे वी लॉस्ट इट. ऐसा कुछ नहीं था गोइंग इनटू द मैच कि हम तो जीतने वाले हैं फॉर श्योर बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिक्सचर दैट वी वर facing was against Wolves. So that was a little difficult fixture than what City had to face. ठीक है, और वो मद्देनजर रखते हुए उसके बाद भी एस्टन विला ने 2 गोल कर दिए एंड वो होप ना मतलब जो लग रहा था कि यार जो लोग वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा स्टोरी द नैरेटिव की एंड में जिरार्ड जिता देगा वो सब, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब देखते जरूर हैं बट एज फैंस हमने सोचा नहीं था दैट विल हैपन समथिंग लाइक दिस. जब वो सामने से पैन आउट होता दिखा और ऊपर से हमारा स्कोर लाइन इज 1-1 एंड यहाँ हम नहीं गोल कर पा रहे हैं टू गो थ्रू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि व्हाट इफ एस्टन विला विंस इट और हम यहाँ पे इक्वलाइज करके बैठ गए, मतलब ड्रॉ हो गया और गोल इन, दैट विल बी इवन वर्स. फिर तो क्या बोलेंगे, है ना, कितना अच्छा सीजन. फिर तो आई थिंक एवरीबॉडी विल डिस्क्रेडिट लिवरपूल फॉर व्हाट अ वंडरफुल सीजन दे हैड इफ वी डिडंट पुश थ्रू देन. लेकिन जैसे ही हमने गोल्स निकाले उसी टाइम उन्होंने भी चक्के लो इक्वलाइज कर दिया. ये मतलब इक्वलाइज क्या, उन्होंने तो लाइक एकदम कमबैक किया बहुत अच्छे से. शायद तो दैट्स व्हाट 5 आई मिनट हर्ट अबाउट. 5 मिनट्स में गेम चेंज कर दिया गुंडोगन ने आके. गोल्स यार स्कोर्ड वही एंड ना, सीरियसली थोड़ा appreciable भी है when it comes to City because nerves were high, pressure was there even for them because considering the way they also lost points, they were dropping points as well. So considering all that, I think nerves were really really high in the match. But City ने जिस तरीके से comeback किया ना, वो I think वही कर सकता है who has a lot of experience winning the Premier League. वो nerves उनको शायद चैंपियंस लीग में हम नहीं देख पाते उनके अंदर वो चीज जो हम प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने में देख पाते हैं. बट अगेन द क्वेश्चन वाज दैट कितना बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन आई एम ओके विद इट बिकॉज़ इट्स अ गेम, एट द एंड इट्स फुटबॉल, एक जीतेगा एक हारेगा. तो दैट wasn't our time, maybe this is what I can say, but I had a wonderful season with Liverpool this time and it was amazing. मैंने पहले भी बोला ऐसा लग रहा है खून बढ़ गया होगा अंदर से क्योंकि have been really happy with the way team performed. So ओके. ऑब्वियसली यू शुड बी हैप्पी क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे इट इज वेरी गुड, वेरी गुड. इवन जीत yeah. शायद से उसकी कि जीत ही आती. साला आ गया था. यू रिमेंबर साला ने फैंस को बोला था दैट ही वाज सेलिब्रेटिंग बट फैंस टोल्ड नो यू आर स्टिल डाउन. सिटी जीत रही है. सो डिसअपॉइंटेड हो गया साला, वापस गया, चलो खेलना है वापस. इट वाज शोज दैट Hmm. हाउ मच they wanted to win and what a season they are going to have. So coming to the Champions League fixture, how much you are nervous? Because again facing Real Madrid जिसने हराया था, and Salah already told that we have a score to settle. So how much you are Hmm. motivated for the fixture and how much you are nervous as well? Both. I am both because see, I'm excited for the fixture because we're facing a very very solid team who नितिका, have a lot of experience. थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है. अभी बेटर है क्या? हाँ, अब बेटर लग रहा है. ठीक है ना अभी तो? हाँ, हाँ. ठीक है, ठीक है. Okay. 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 So like I was saying that feeling दोनों, I'm feeling nervous as well as I'm excited because we are facing a very solid Real Madrid team and अगर मेरे को कोई पहले पूछता कि कौन सा ऐसा फिक्सचर है that you don't really want to face in the Champions League, मैं हमेशा यही बोलती थी, it's Real Madrid that I don't want
face because we don't really have a good past record in it. But I think tabhi hota hai that that's why you say that we have a score to settle, you know. And whatever Mohamed Salah said, it's because he was the most affected by whatever happened in 2018 UCL finals, the most affected by it. तो यार होता है, जो चीज के लिए तुमने इतना मेहनत किया है, because these are the players जिनको वो once in a lifetime opportunity मिलता है, because that was the season जब साला को बोला गया था कि he's a one season wonder. Everybody thought this is it for him, and he won the Champions League next season. उसके बाद जाके Premier League भी वो जीता है, तो the team is quite motivated, which they should be. अगर डर के बैठ गए तो फाइनल्स तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, तुम वहां खेल ही नहीं पाओगे. I understand that it might seem for some fans that they think it's overconfidence. I don't think that it is, because even the statements that are coming from Madrid players, that seems like even they are equally confident in the game. And why shouldn't they be? This is a very important fixture. अगर तुम डर गए इस फिक्चर में तो तुम भूल जाओ, फिर तो तुम पूरा क्राउड देखोगे, वाइब देखोगे, तो नहीं हो पाएगा. एक So और that's चीज why ना, I think रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप डर नहीं सकते, बिकॉज दे आर, वो ऐसे उनका उनका फोर्टे है ये, दे वॉन 13 यूसीएल, मतलब उनके सामने आप डर नहीं सकते, दे आर द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स. उनके mm, साथ तो यू हैव टू गो फेस टू फेस, एंड लिवरपूल इज द ओनली टीम मेरे हिसाब से तो जो मेंटालिटी में मैड्रिड को इक्वलाइज कर सकती है. मैन सिटी exactly. इतनी नहीं है मेंटालिटी, पीएसजी भी नहीं थी, चेल्सी ओके सेकंड लेग में थी, बट फर्स्ट लेग में वैसा कुछ शो नहीं किया था उन लोगों ने. Hmm. ओनली लिवरपूल, जर्गन क्लॉप का मेंटालिटी वी ऑल नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. टैक्टिकली आउटक्लास होने के बाद भी ही ऑलवेज कम्स इन सेकंड हाफ, जो टॉक देता है, लिवरपूल कम्स मोर मोटिवेटेड. तो इसीलिए ऐसा Hmm. हार नहीं सकते, जैसा आप बोल रहे हो, हार नहीं मान सकते. Absolutely, and that is why players should be motivated in a game like this. तो क्या बोले अभी, क्या तुम साला को बारी बारी पुश करोगे to speak something about it so that you can create a headline? तुम बारी बारी वेलवर्डी को पुश करोगे to speak something about, अरे तुमने मो साला ने क्या बोल दिया. They will not ask a logical question there because they need to sell the news, and इसके बिना कैसे होगा वो चीज. So that's why ये जो नेगेटिव एंड फैन बेस ऐसा होता है कि वो उस नेगेटिव चीज में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, विच आई थिंक दैट दिस शुडंट हैपन. बट ठीक है यार, मैच के पहले नर्व्स रहता ही है. देन अगेन, लाइक यू टॉक्ड अबाउट मेंटालिटी, दिस इज दैट बिकॉज हमने मेंटालिटी देखा है रियल मैड्रिड का इन द पास्ट. द वे दे हैव कम टिल हियर यार इन द चैंपियंस लीग फाइनल्स, इट्स क्रेजी. And what Liverpool has done is that we've had such tight schedule, and उस schedule के बीच में take out time for UCL. अरे अगले बार अगला मैच किसका है, अरे FA कप का है, अगला मैच किसका है, अरे प्रीमियर लीग का है, अगला किसका है, अरे कैरेबाओ का मैच है. तो मतलब this is the way we've had a season. It's, I'm not complaining about it. This is the like perfect scenario to have a season like in which you're competing in every front. But again, उनका definitely tight schedule था, लेकिन हमारा fixture मतलब हमारा schedule बहुत टाइट था. उनके fixtures I can say were a little harder than expected, just because it wasn't expected from Real Madrid to perform the way they did. That was a team in transition. Think about PSG, think about City, think about Chelsea. It just seemed like Madrid didn't have a chance against them. It's weird. They are the La Liga champions, still they are the underdog against these clubs. That's why I'm saying it's just so weird the way this fixture is set up like that, and the team in transition still won the La Liga, still in the Champions League final. So the mentality factor definitely comes into it. Even also Madrid के अगेंस्ट खेल रहे हो तो you can't write them off till the last second. We saw what happened with Man City. एंड ऑल्सो एक नैरेटिव है कि पिछले बार जब लिवरपूल फर्स्ट फाइनल खेली थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, इट वाज आल्सो इन पेरिस, एंड लिवरपूल डिफीटेड रियल मैड्रिड एट दैट फाइनल. और शायद वो एक ही फाइनल है बहुत सालों से जो मैड्रिड हारी है. Mm, तो इट कैन बी अ mm, नैरेटिव, वापस वो चीज हो सकता है, एंड अ स्कोर कैन बी सेटल्ड. mm. Let's see. Even Liverpool is boosted by Thiago and Fabinho are playing completely fit. They are, so they are boosted. So how much you think will be better for the team? Because Thiago since January has an amazing season. जिस तरीके से वो खेलता है, ड्रॉप डिप करता है, it's fantastic. मतलब magic, shows magic. जैसा राइट ऑफ कर दिया था, no, Thiago has come back. He has shown. So what much you think they वो दोनों important हो गए, and what should be their midfield trio? Will it be Naby Keita or Henderson? What should be the trio? See, this is a very good question because considering the midfield of Liverpool, I think that is one area where I can say that थोड़ा सा aging midfield बोलूंगी मैं वो रहेगा, because you see अगर Thiago, even though it's not like he's 100% fit or 100% sure that he's going to play for Liverpool, but हाँ थोड़ा good news है कि train कर रहा है, one on one में भी उसको 2 training session चाहिए होंगे just to see that if he's like perfectly fine or not. तो एक injured player को खिलाना I feel थोड़ा risky move हो सकता है in a match like this. But again, considering the bench that we have had,
अच्छा बेंच है, क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है व्हेन टॉक अबाउट मिडफील्ड. यू कैन ब्रिंग जेम्स मिलर इन, ही इज अ वर्क हॉर्स, ही इज अ मैन ऑफ स्टील, he'll play wherever you want him to play and grind the sort of result that you want. Okay, but still sometimes you need a player like Thiago in your team who is so experienced, and Liverpool brought him for a reason in the squad. And ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दिखा था वो चीज कि क्या थियागो कर सकता है. पीपल जस्ट डिक्लेयर्ड हिम अ फेलियर कि प्रीमियर लीग में चला ही नहीं. बट आई एम टेलिंग यू द पास्ट 12 or 13 मैचेस दैट ही हैज प्लेड, हर मैच में वो मैन ऑफ द मैच हो सकता था. द बॉल प्रोग्रेशन ऑफ दैट मैन, tackles that he wins in that midfield, that passing range of passing is awesome. I mean, he stuns you the way he plays sometimes. And कैसे बीच में से कट करके through the lines his ball is gonna between the lines. exactly between the lines his ball is gonna find Mane, or maybe he'll create something really good for Luis Diaz on the left. I mean, that good is Thiago Alcantara, and that's what he's showing these days, and that's why we need experience, यार. क्योंकि उनका मिडफील्डर ट्रियो जो है, that's Modric, KCM. Casemiro, Cruz. मतलब just think about that, they're so experienced, and that is the one of the reasons that Madrid has been performing like that the way they did, the mentality. क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है ना ये सब में कि उनको पता है यार, ठीक है 2 गोल खा लिए, कोई नहीं, वी कैन डू इट, तभी वो लास्ट तक जाके कर भी देते हैं. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काम आता है, इसमें कामाविंगा, रॉड्रिगो, वेरी इंपॉर्टेंट role to play, and they're very young players. But वही है, जो mixture of it, it's a proper team Real Madrid. It's not that एक एक player तुमको अलग अलग खेलता दिख रहा है. सब एक टीम है और अच्छा से एक जेल्ड अप टीम है. That's why you see that this team has done so well. And वहीं अगर लिवरपूल की मिडफील्ड की बात करूं, फबिनियो इज अनदर वेरी वेरी स्ट्रांग ऑप्शन. बट जहां मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वो ये है कि जब भी फबिनियो इंजरी के बाद आता है ना, ही नीड्स अ गेम और टू टू just settle in. We don't have that. We don't have that game in, एक गेम दो गेम जो हम कहीं एक important मैच में खेल रहे हैं, for him to just find his pace, just find his way of playing. Because sometimes that happens, because Fabinho is a first line of defense, and अगर वो चाहे हर कोई बिल्डअप किल कर सकता है वहां से, so that वैन डाइक एंड पीछे अगर मैटिप है, कोनाटे है, उन पे कोई प्रेशर ना है, so that वो वन ऑन वन चांसेस विद एडिसन वेकर हम बचा पाए. बट अगर फबीनियो का ऑफ गेम है, वो हमको बहुत इफेक्ट करता है, देन उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ब्रिंग इन कीटा, हैंडो को नंबर 6 बनाओ, एंड देन थियागो उस तरीके से खेलो. व्हिच एंड I'm telling you, if it's a day for Fabinho, there is no way that we are not gonna get goals first. Maybe we might even win the game. So Fabinho का होना टीम में बहुत मैटर करता है, because he's one of the best out there. But again, he has to feel settled in the team. He has to feel that he's gonna do it and not need time in a game like this. Because to counter Modric there, the runs of Modric, the creation of Cruz, we need Fabinho. And then considering who will be the third player there, I could have vouched for Keita there. I could have, because we need a little forward thinking in that midfield as well. But I'm going to go with the captain here, because see, having Endo. Henderson in the team is so important in fixtures like these, because he is a great captain. And not just that, the cover that he needs to provide for Trent, and the understanding that he has with the players, and the message that he needs to tell the players from Klopp, that conversation, that keeping them grounded. I talked about the experience and that factor which Modric, or maybe a Benzema brings in the team. That's what Hendo is gonna do, and it's going to be very very crucial to have Hendo in the game. And if it's Hendo's day as well, he will really have a very good through ball to a player or something आगे जाके, and then that might turn into a goal, because that's what Hendo does. He's so unpredictable with his passing range, which sometimes you feel that अरे ये तो सिर्फ बैक पास ही कर रहा है, अरे ये आगे जाके बॉल लेके बोलेगा मुझे दे बॉल, फिर बैक पास कर देगा. But it's not that. जिस तरीके The long ball of Hendo is very good. Chelsea का केस भी बहुत exactly, अच्छा था Hendo's long balls. He's very that's what unpredictable. I'm You are saying. right about that. Very unpredictable. So that's why I think I would like to have him. No doubt, Kita is a much more creative player than Hendo. He is much more better skilled than Hendo. But I don't think that he would have the nerves to play in a match like this, because एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है इधर. So I'll go with Hendo. Even also opposition में टीम में कैसेमिरो ऐसा है who likes to disrupt the play. कीटा खेलेगा तो शायद उसको Exactly. फेंक देगा, वो उड़ा देगा वो कैसेमिरो, because he is like a अरे disruptor. टैक्टिकल फाउल्स जो कैसेमीरो
कैसेमीरो करेगा ना, मतलब 1-2 तो ऐसे ही निकल जाएँगे वो सब करके, तो इट विल बी अ लिटिल और रेफरी येलो कार्ड भी नहीं या देता है कैसेमीरो को और वो सिर्फ हँसता रहता है। करता है फाउल, हँसता रहता है। मतलब आई हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस जैसे मेसी को हमेशा एल क्लासिको में चलने ही नहीं देता था। टैकल्स, टैकल्स, टैकल्स बस ही इज़ तो उसके लिए यू हैव टू ब्रिंग हैंडो फिजिकली थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। हुँ। And so there is a news that 50 to 60 40 to 50,000 Liverpool fans have been traveled. तो how much it will be a boost मतलब ऐसा बोल रहे हैं शायद बहुत रेड्स रहेंगे वहाँ पे, रेड आर्मी रहेगी। तो how much will this be beneficial for Liverpool? A lot, the more the merrier. And that's the saying, and I think I will go with that. देखो, I'm sorry to bring this example here, but Camp Nou में मैच था फ्रैंकफर्ट के साथ बारसा का, and it was all white. And just imagine, it was your home ground, but did it matter? It didn't, because there were no fans there, considering the number of fans there were of Frankfurt, and that changed the game entirely. And that's what I'm saying, that चाहे होम ग्राउंड जो तुम्हारा कुछ भी, जैसे हमारा एनफील्ड है, कैंप न्यू है, कुछ भी है, दैट वोंट मैटर टिल द टाइम देयर आर नो फैंस at that place to support you, which is why we hated that COVID time. Yeah, we hated playing at your own home ground without fans there. Did it matter? It didn't. चाहे वही ग्राउंड है, चाहे वहां पे तुमको जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, it doesn't matter till the time you don't have fans. And that is why ना लिवरपूल के games, if you notice back then, जब कोरोना वाला टाइम था and fans weren't allowed in the stadium, we lost maximum number of matches in our home ground. We did, because it affected us so much. And that is why I say the Anfield atmosphere matters so much. Of course, the match is not at Anfield, but having fans there and the atmosphere that they create will be a huge boost for the players, for Klopp, for everything, because the cheers, that same the things that they do, it's so important. Be it Real Madrid, be it any club out there, the fans are the most important. They are the 12th man. I think that is going to be a huge factor for us. एब्सोल्युटली मतलब फैंस रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ऑब्वियसली दैट चीयर यू विल नेवर वॉक अलोन। इट्स मतलब अलग मोटिवेशन लाता है। कमिंग टू द बैक साइड मतलब डिफेंस पे आते हैं। विल यू स्टार्ट मैटिप और कोनाटे? वर्जिल एंड तो खेलेगा ही मतलब मैटिप रहेगा और कोनाटे रहेगा। इवन इन द फ्रंट थ्री किसको खिलाओगे आप फ्रंट थ्री में? See, talking about the defense, मैं ना इतना कंफ्यूज हूँ, लाइक आई हैव बीन ऑन मेनी पॉडकास्ट कल भी, और मैं हर टाइम किसी से बात करती हूँ ना, वो चेंज होता रहता है। कभी लगता है कि नहीं भाई, हैज टू बी कोनाटे, कभी लगता है नहीं भाई, इट हैज टू बी मैटिब। तो आई एम like I always say, I'm so happy I'm not the manager. भाई हम तो fan हैं, that decision Klopp has to make, it works, it doesn't work, that's all on Klopp, and we trust in him because he knows that better. But still, as a fan, if I can talk about that, and I still feel कि देखो, बहुत ज़्यादा अटैक खेल सकते हैं Madrid if it comes to it, and then Benzema Vinicius Junior का partnership, and not only that, मान लो it's 75th minute of the game and Carlo Ancelotti brings in Camavinga, Rodrigo, because that's what they're going to do. Toni Kroos से शुरू करवाएंगे, who's the best player in press resistant, he's a press resistant player. वो बंदे को तुम 3-4 बंदे लगा दोगे ना वहाँ पे, प्लेयर्स, लिवरपूल प्लेयर्स की, यार तुमको वहां से बॉल विन बैक करना है। या The short link up of Cruz is amazing. जिस तरीके से बैक से छोटे-छोटे passes से he just breaks the press and Liverpool के against it's very important because they press very high. पागलों की तरह प्रेस करते हैं और एग्जैक्टली, 90 मिनट्स तक प्रेस करेगा लिवरपूल। दैट उसके इज लिए व्हाई आई एम क्रूज सेइंग, का व्हिच वेरी इज व्हाई इंपॉर्टेंट। क्रूज इज इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके जितना भी मैंने सुना है, सी आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ ला लीगा मैचेस, बट जितना भी सुना है क्रूज के बारे में, वो ये दैट वो पूरे 90 मिनट तक तुम उससे एक्सपेक्ट करो टू परफॉर्म एट दैट सेम लेवल द वे ही स्टार्टेड द गेम, वोंट हैपन, व्हिच इज व्हाई दे ब्रिंग इन Kamavinga in, to get more intensity in the game, to get more fresh legs in the game, to up the intensity and थोड़ा उनके फेवर में आए। और ऊपर से Rodrigo has been such a clutch player for them, so young, and just at top of the game when needed. So that's why I'm saying कि क्या होगा कि अगर उसके बाद भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है that scoreline is 0-0 and they bring in somebody like Rodrigo, somebody, we would need pacey center backs here, because we are going to play high line, and तुम क्लॉप से जो मर्जी एक्सपेक्ट कर लो, ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो ना सिट बैक कर लेगा। अगर तुमने 3 गोल भी ही मार दिए वोंट तो चेंज वो द that's टैक्टिक्स। no, that just doesn't happen, because that's not the way we play. ठीक है, वो कभी-कभी तुमको फ्रस्ट्रेट भी करेगा कि यार क्लॉप प्लीज यार थोड़ा मतलब अभी चेंज कर दो, कोई बात नहीं ऐसा, बट दैट वोंट हैपन, इट डजंट वर्क लाइक दैट, व्हिच इज व्हाई आई रियली वांट दैट वी शुड, कभी-कभी लगता है मैटिप का इंटेलिजेंस के साथ लेट्स गो, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ही इज अ प्लेयर हु विल also find space, and just move forward.
and reach till the final third of the other half and शायद create something. But again वो हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है कि मैटिप इतना आगे चला गया ड्रिबल करता करता, अगेन ट्रेंट भी आगे जाता है, सब आगे चले गए, वन लॉन्ग बॉल है ना, कितना ही अकेला वैन डाइक वहां पे डिफेंड कर लेगा, एंड दैट कुड हर्ट अस, व्हिच इज व्हाई stay a little back, वो थोड़ा पीछे रहेगा, and he is more athletic and physically more stronger than Matip. So that's why I think I'll go with Konate here. I'll place my bet on him even though he's quite young, and still I think that I can go for Konate here. That will be much better for us since थोड़ा वो right पे है, और वहाँ पे we know there is Vinicius going to be Junior. Vinicius Junior. So we'll need another body there to just cut that part. Also, thinking the last matches that we have had, not 2018, but the 2021, the ones we played in the quarterfinal against them. So the centre backs were Nat Phillips and Ozan Kabak, right? Even though matlab, Nat Phillips and Reece Williams are our cult heroes. They were so good, like जब किसी का जरूरत था, so they stood up and they performed the way they did. And still now going with these sort of defenders that we have had, I feel a little more confident, and nothing against Nat Phillips or anybody. But still, these are our regular playing 11, and I would love to see how this pans out, because confidence तो रखना पड़ेगा यार टीम में, अगर इनमें अभी अब नहीं रखूंगी तो कब रखूंगी the way they played यार. So वो रहेगा थोड़ा. And talking about the forward line, Salah, Mane, Jota, then Diaz, then maybe Minamino, Origi won't be playing. So we have sort of very good players in there. And obviously, this is a big game. You have to have Salah in, you have to have Mane in, like both of them have had incredible seasons. Incredible season. Other talk of the town is Carvajal and Luis Diaz battle. People are talking about that. Ki how is that going to pan out? Because Sara narrative ban raha tha Vinicius Junior and Trent, but there is Diaz as well, who is so pacey, who brings chaos in the game, who is so good with the dribbles, who is going to find space in that left wing, and create chance or two, because he's seriously that good. And another thing is that he finds himself in such good positions because छोटू सा है, and not very strong sort of a player, so he'll find space and just get in that final third, and in the penalty box. तो वो काफी क्रूशियल है. But हल्का सा जो मुझे लगता है, and it can be debatable, that I feel कि वो कभी कभी ना जहाँ पे I feel he can convert those chances, he does not. बस कहीं कहीं वो That's लगता it. है, and it's not on the player. He's still so young. अभी अभी प्रीमियर लीग में आया है, and इतने अच्छे से सेट हो गया प्रीमियर लीग में आते ही. He still has the training session पूरा, वो जो 1 month का ट्रेनिंग रहेगा when Liverpool will come to Asia. He still has to do that, and that's so important for a player. Still, he's so good. Everybody is talking about Diaz, but again, I'll say that Tottenham game ki we could have won. People don't see that. We could have won that because Diaz was in such good positions so many times. He just didn't convert that. तो इसके लिए मैं उसको कोई negate नहीं कर रही हूँ, कि वो अच्छा नहीं है. I'm just saying कि अगर मैं कोई गलती कहीं से भी ढूंढूं, वो थोड़ा सा ये रहेगा. But otherwise, I think that will be a solid team if we are talking about Liverpool. एक और अच्छा पॉइंट बोला ना, कारवाल हैव बीन डिफेंसिवली वनरेबल. हमने देखा था एम्बापे के अगेंस्ट इट, ही वाज गॉन. और लुइस डियाज ब्रिंग्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. आई वोंट कंपेयर, बट लुइस डियाज कैन ड्रिबल इन पास. Coming to Real Madrid's factor, how much are you afraid of Karim Benzema? Because he has been another level for, मतलब जो भी टच The करता है वो best बंदा player. गोल चले The जाता है. best player. एनीथिंग Mm. एनीथिंग, लेफ्ट राइट, कुछ भी हो जाए. How much are you afraid of Karim Benzema? So out of I nowhere he can spoke score about this in goals. my videos. I spoke about this in my videos, that anything he touches turns into goal. मतलब we say ना, it turns into gold, so it turns into goal, and that's what I believe, that's what he does, because he makes it seem so simple कि तुमने ऐसे पास कर दिया, उसने बस हेड डायरी तो मारा है. It's not that. It's so difficult the way he controls that ball, and he knows that it's going in. I mean, seriously, one of the best players out there this season for sure. And I don't think that बेंजिमा से मैं बिल्कुल भी ये बोलूंगी कि भाई हम संभाल लेंगे, वैन डाइक है, सन है, तगड़ा टीम है. नहीं यार, है बंदा सही तो है. It's going to be scary, and I'm not gonna take Benzema lightly at all, no matter what, because he's one of the best out there. So again, it's scary to face the best, but it's really good to win against the best. मजा तभी आता है अगर एक अच्छे प्लेयर अच्छे टीम को हराएं, rather than कुछ भी करके अगर तुम जीतते हो गेम, तो उसमें क्या ही मजा है. I think that is why it'll be exciting.
exciting to see how things are going to pan out because there's such a good narrative of कि Van Dijk कर पाएगा कुछ, Alisson कर पाएगा, will Alisson pull a Karius as well, Benzema के सामने, will something like that happen too? So that is why I feel कि there are so many things that uh, maybe आने वाले एक हफ्ते बाद कल के मैच के बाद हम यही डिस्कस करते रहेंगे कि देखा यार if things don't pan out the way we thought like Liverpool fans बिल्कुल। तो पूरा नैरेटिव हमारे अगेंस्ट किस तरीके से Virgil van Dijk, Trent, Alisson मतलब you understand there is so much at हम्म। stake and even for Real Madrid there's a lot at stake and I think people are going to seriously talk about that for a week I'm sure because बहुत सारी चीजें हैं that people are looking forward into this match. I feel Liverpool is under more pressure because there was a hope of quadruple, and if they lose, they will get slandered. Especially English press जो है, they will slander. And Madrid तो transition season, as you said, transition season में थी, तो शायद लोग उतना नहीं बोलेंगे. And coming to one more thing कि वर्जिल वैन डाइक के साथ मतलब लोग डर जाते हैं. I feel, but Karim Benzema, I don't feel he would be scared. He will go Hmm. one on one directly. ही मतलब भिड़ जाएगा वर्जिल वैन डाइक के You know, साथ. it's like you need to know you're the best to be the best. If you don't know that, I think Karim Benzema knows that he's one of the best. That's why he has that aura around him. And I think Mohamed Salah knows that what he has done is incredible. AFCON के लिए गया था यार अपने कंट्री के लिए पहले AFCON में हारा फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हारा still to come back in the game and अपने मोटिवेशन को ऊपर रखना यार हम एक टेस्ट में कम मार्क्स लिया मैं तब आई वाज़ अ पढ़ाकू सो आई टॉक अबाउट टेस्ट तो अगर टेस्ट वगैरह में कम मार्क्स आ रहे थे 2 दिन तक हम सोचते रह रहे हैं उस चीज़ के बारे में दैट्स at such a big stage that you're talking about. So that is why I'm saying कि थोड़ा criticism was unfair that he got because I'm telling you if you need to know about Mohamed Salah just keep looking at that right wing. Don't look at कि यार ये गोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Just look at that right side क्योंकि दो डिफेंडर्स को चाहिए होता है. वो दो डिफेंडर्स को अट्रैक्ट कर लेता है. स्पेस बनता है. उनके डिफेंस में थोड़ा स्पेस बनता है. वहां से वो एक पास करेगा माने को. माने जाके माने रन लेगा और गोल करेगा. So I think people need to understand that as well about Mohamed Salah कि तुम जो देख रहे हो कि गोल किया कि नहीं तुम चीज देख लोगे गोल किया कि नहीं the match is not just about goals यार obviously for winning you need to get goals but I'm saying you need to understand the positioning of Mohamed Salah as well and जब से center forward माने आया है he's getting goals he has found a new position in that and I love what Mane has done but उसको वो balls बना बना के वहां से इधर Luis Diaz भी दे रहा है Salah भी दे रहा है इधर से because you'll see the combination the link up of Mane and और Salah साला is एंड माने हैज amazing बीन वेरी गुड नाउ. पहले से बेटर हो गया इस very बार. very good बहुत better हो गया वही चीज है because that's what I'm saying people need to look at this in that perspective as well that why you are not seeing Salah a lot on score sheet and why you started seeing Mane as well but again I'll say that Mane ने कुछ ऐसे incredible goals किए हैं which I didn't expect that he would get those I didn't expect that I thought हमेशा Mane के बारे में problem होता था जब वो left पे था कि भाई please be clinical please we need that don't just shoot over the tops don't do that but touch wood Mane has like seriously improved a lot and it's visible I think it's visible for everyone that's why we were talking about the players knowing that they are good I think Virgil van Dijk knows he is good that's why you'll see he's really calm and imagine सामने से लुकाकू आ रहा है and तुम वहां खड़े हो भाई तुम डर जाओगे एक बार के लिए but that is what Van Dijk does कि you need to be calm you need to know that you can handle that pressure तभी वो इतने calmly चीजें clear कर देगा and obviously there can be one or two instances where it doesn't happen there are players it's not like तुमने एक program set कर दिया है कि okay Virgil van Dijk हर ball को ऐसे करके it's not gonna work like that there are players so mistakes तो होंगे ही but give them space यार they are very good players so that's why the match is going to be very exciting. In the mid, I want to ask you in the midfield of Madrid, will you be playing Valverde or Rodrigo उस तरफ right wing पे? Will it be Valverde starting or Rodrigo? Because पिछले मैचेस में तो Valverde ही स्टार्ट किया है. तो will Ancelotti go with the Hmm. same lineup as most predictable it is? I think yeah I think जितने भी मड्रिस्टा से बात किया है they were talking about this that Valverde start करेगा because he provides another cover for Carvajal in the back तो लुइस डियाज होगा उधर तो वो काफी हेल्प करेगा आई थिंक हैविंग वेलवर्डी देयर बट अगेन रोड्रिगो इज सच अ गुड ऑप्शन फॉर अ सुपर सब मतलब देयर इज अ क्या बोलूं एक अलग तोप है यार तुम्हारे पास एज अ सुपर सब दैट यू कैन ब्रिंग हिम एंड चेंज द कोर्स ऑफ द गेम प्लस तुमने अगर एक यंग प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे दिया ना
कि भाई तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, तूने तो पहले भी 2-3 मैचेस में हमको बचा दिया है। वो प्लेयर अलग लेवल पे खेलता है यार, एंड वी हैव सीन दैट इन विनीसियस जूनियर एज़ वेल, इन द पास्ट 2 years I feel, जब लिवरपूल के अगेंस्ट उसने ब्रेस मारा था और उसके बाद his career has been really really good. So I feel तब से you will see that Vinicius Junior has found confidence and under Ancelotti has done really well. तो young player को confidence देना is another boost. That's what happened with Harvey Elliott. Klopp ने start of the season में Harvey Elliott पे पूरा एक बेस किया था कि we are not signing players, सिर्फ कोनाटे साइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे मिडफील्डर्स हैं. Another option that I'm adding from our academy is Harvey Elliott, and Harvey Elliott is going to be that. And he started every game. But that freak injury against Leeds United, he was so good. He was so good at that stage, and I can see कितना अच्छा उसके लिए season रहता. And we would have had a really young talent in that midfield. Maybe signing करने का सोचते भी ना कि यार है player. But just because of that freaky injury और उसके बाद we just didn't see that Elliott there. पर हम उसको मौका कहाँ देंगे खेलने के लिए? थियागो जनवरी का के भी बाद इमरजेंस हो गया ना, सॉरी. थियागो का भी तो इमरजेंस हो गया एकदम अच्छे से आफ्टर जनवरी. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वही है ना, पीपल द प्लेयर्स दे स्टेप्ड अप व्हेन नीडेड टू. जनवरी के बाद फर्मीनियो 5 to 6 गोल्स यार, दैट्स व्हाट वी नीडेड. उस टाइम पे जब हो नहीं पा रहा था, साला माने है नहीं है, कीटा है नहीं है इन द मिडफील्ड. देखो कीटा जब अपने नेशनल टीम के लिए खेलता है, मैन ऑफ द मैच, दिस दैट, तो the guy has it in him. He's a very very good quality option to have in the midfield. Just need to work on that particular day. बहुत सही बात बोली आपने, बहुत सही. बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट द यू हैव टू ट्रस्ट द यंग प्लेयर्स. बट आई थिंक वेलवेडे को शुरू करेंगे. सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट बिफोर एंडिंग, व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शन? हु इज विनिंग एंड व्हाट विल बी द स्कोर लाइक? Liverpool is winning. Liverpool has to win यार, मतलब has to be, क्या ही बोलूं, मतलब क्या. It's such a weird thing to talk about this when it comes to it now, because obviously I want Liverpool to win. I know मेरे को तो आज कल रात से शुरू हो गया था पेट में कुछ कुछ कि गॉड द मैच इज कमिंग, गॉड अभी इतना दिन रह गया, गॉड इतने घंटे रह गए हैं, ये सब हो रहा है. मतलब सही में ऐसा बोर्ड का एग्जाम होता है यार कि क्या हो क्या रहा है. वो पहला बोर्ड नहीं होता जब देने जाते हैं, एंड पूरा हम देखते हैं कि नए स्कूल में जाना है, एंड ऐसा लगता है दिस इज द क्वेश्चन मोस्ट आने वाला है, इम्पोर्टेंट थिंग पहली बार दैट. बैठने वाले हैं, सॉरी. क्वेश्चन आने वाला है, पेपर आने वाला है, नए नए बेंच रहेंगे, नया पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, स्कूल रहेगा, हमारा कैंडिडेट रोल रहेगा, वी नंबर डोंट नो. वहाँ चौक से लिखा होगा. मतलब यू अंडरस्टैंड दैट इज the Hmm. nerves that you get for your own exams. So that's what it is for the club as well. Obviously, I would want Liverpool to win, and this is a very important match. And yes, there is a score to settle as well. You can say that because the record in the past 4 years haven't really been good against Real Madrid. So अगर जीतते हैं तो एक बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट जीतेंगे. I'll be happy about that. अगर हारते भी हैं तो ऐसा होगा कि यार बहुत बढ़िया टीम है जिसके अगेंस्ट हारे हैं. So that is also okay. मतलब it won't be okay in that particular day. I'll get fined in 2-3 days and then say that it's okay. So again, I'll say that it's 3-1 that I think Liverpool can do it. I want to win by that scoring because 3-1 has haunted us against Real Madrid a lot many times. So I'll say that 3-1 in favor of Liverpool. एक बात तो है कि लिवरपूल टैक्टिकली आउटक्लास करेगी, बट व्हाट विल बी द मेंटालिटी आई डोंट नो. व्हाट बेंजेमा विल It's ब्रिंग. all about mentality. Finals में तो tactics सब छोड़ो. It's all the So mentality. it's all about. And I'll tell you something. Like I was watching अभी कुछ 15 दिन पहले ना, 15-20 दिन पहले ही जैसे ही ये फिक्सचर टाई अप हुआ था, मैं फिर से 2018 का मैच देखने गई फाइनल्स का कि भाई आई हैव टू लाइक सी व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज़ हम उस टाइम देखते हैं देन वी जस्ट लाइक सी द हाइलाइट्स और समथिंग, बट आई वांट टू वॉच द होल मैच. सो आई वेंट टू वॉच द होल मैच अगेन. मतलब यहीं पे देखा लैपटॉप पे, एंड आई टेल यू 33 मिनट्स तक वी वर डोमिनेटिंग. वी वर वेरी Salah was गुड. creative, was very good in that flank. It was very good. And I'll tell you, Karius actually saved 2 or 3 chances that they created. Then another thing I noticed was हमारे पास obviously possession ज़्यादा था, and हमने इतने chances try किए थे till that 33rd minute when Salah was there, and Mane was superb as well. Then Ronaldo wasn't getting space at all on the right hand side. मतलब हमारे right पे जब Trent था वहाँ, Ronaldo was on the left, and Trent didn't give him any space at all. And you're talking about one of the best player in the world. Okay, that was the whole scenario. And the thing is, तुम ना अपना सीजन किसी ना किसी प्लेयर्स पे, कुछ ना कुछ प्लेयर्स पे बेस करते हो, एंड हमारा वो सीजन था साला पे बेस. आई से दैट वो था बिकॉज साला जस्ट वाज आउट क्लास. ही वाज दैट आउट क्लास प्लेयर यार. कितना
कितने फॉर्म में था बंदा, एंड सडनली 33rd मिनट पे थिंग लाइक दैट हैपेंस. थोड़ा सा टीम का मोटिवेशन उसी टाइम मैंने देखा कि भाई तुम इतना तो अच्छा खेल रहे हो, कोई बात नहीं अगर चला गया, डोंट वरी, जस्ट बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज हाउ आई एम रिएक्टिंग व्हेन आई एम वाचिंग द मैच. आई नो हाउ इट्स गोइंग टू एंड, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि भाई इतना तो अच्छा खेल रहे हो, क्यों टेंशन लिया है तुमने, मतलब वो ना एकदम से The मोटिवेशन गिर aura गया of that पूरे के. player, that aura of the player चला गया ना इंजर्ड होने का. The aura went and the team got एग्जैक्टली demotivated. वही 33rd मिनट के बाद जैसे वो इंजर्ड हुआ ना, वो खेला 2 मिनट और कि नहीं, हिल प्ले. He felt that it's not possible, पूरा प्रॉब्लम हो रहा था, then he went out after 4 or 5 minutes. मतलब that happened and it just उसके बाद देखा, and you know Mane went to him and he was like bye to मतलब बोला तो कुछ भी होगा, but that's what I'm thinking कि तो टेंशन मत ले, हम संभाल लेंगे, just you know because Salah was crying, that was really heartbreaking. But वही मैं बोल रही हूँ ना, इंटेंसिटी दैट, क्या बोलूँ, वो जो होता है ना गेम में जाने के लिए, इट्स द मेंटालिटी दैट यू नीड, इट वाज देयर, बट वो कहीं ना कहीं हमारा ड्रॉप हो गया था आफ्टर दैट इंजरी. एंड इन फाइनल्स द मेंटालिटी मोर देन द टैक्टिक्स, आई थिंक दैट विल मैटर, बिकॉज अगर तुम टैक्टिक्स की बात करो तो पेप को तुम नहीं बोल पाओगे कि यार टैक्टिकली पेप इज नॉट गुड, तो आउटक्लास तो किया ही Tactically यार रियल सबने मैड्रिड outclass ने. किया था. Tuchel, even Pochettino outclassed Madrid, but the mentality was on another level of Madrid. अनदर लेवल. I आई will say एग्री. thanks again, Nitika, for coming in my channel again. I अरे वी hope आपस वेटेड आना मिला. फॉर योर प्रेडिक्शन, व्हाट्स योर अच्छा, मेरा प्रेडिक्शन? prediction to win another Champions League. So I will go with the Liverpool I again. understand. I will be अच्छा मैच होगा. It will be a 2-1 victory. 2-1 victory होगा. I think so. One. Mane will That's score that's and Salah will score and वहाँ wow. पे Benzema करेगा. अरे मतलब that's something that can really happen, and imagine if exactly this thing happens, because this is something that हाँ सही में हो सकता है. 3-1 मैंने थोड़ा वो पुराने वाली जो चीजें हुई हैं उसके बेस पे वैसा बोला है, but 2-1 is quite possible. मुझे लगता है कट टू कट मैच होगा. मैड्रिड भी इतना नहीं देगी. दे विल आल्सो प्ले विद देयर लाइव्स. बट शायद लिवरपूल थोड़ा ज्यादा अच्छी टीम है. थोड़ा नहीं, थोड़ा और बहुत अच्छी टीम है अभी. एट द मोमेंट दे आर द बेस्ट टीम्स Hmm. एंड दे हैव द मेंटालिटी टू बीट मैड्रिड एज वेल. सो लेट्स सी क्या Let's होगा. see. Yeah, आई होप आप वापस आने लगे, मतलब चैनल में और भी आए. थैंक्स फॉर कमिंग. definitely. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. चलो, थैंक्स. I really like to be here, guys. Don't forget to subscribe to his channel and hit that like button, subscribe, you know, bell icon ko bhi dabaye, because it's important. And I think Soham, you produce really good, like you asked really good questions and produce really good content. थैंक्स नितिका. थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिशिएशन. ओके, बाय. Bye. Bye.